Good morning, everyone. I am taking your class on this board. We arranged all the things for you so that it is more convenient to learn the topic, to understand the topics. First, we will discuss about the acid and base. I have given some videos to. I have shared some videos with you, but I know most of the students can't able to understand. But so that for your convenience, I am explaining shortly about acid and base. What is acids? Acids are sour in taste, and base, those are bitter in taste. And about sour taste and about bitter taste, you heard in previous class also. I think in the 8th class there is some topics about the acids and base. But here, what is the main factors in acids and what is the main factors in base? The main factors in acids is it will release H positive ions when you will add water in it, and they will release OH negative ions when you will add water in it. So basically, acid का the main character of acid is it will release H positive ions. ये H positive ions को release करते हैं जब आप इसमें से H मतलब water add करते हो, और जब बेस के बीच में water add किया जाता है तो they will release OH negative ions. These are the main two factors on the behalf of acids and base depends. तो उसी के इन दो के behalf पे you will get what are acids and what are base, and some more common factors also there. So you can say कि these are the indicators. On the presence of indicators, you will check these are the acids or these are the base. But the main common thing in acids and base, so in acid they will release H positive ions, and in base they will release OH negative ions when basically in water. So now next is what the example of acids: lemon juice, HCl, hydrochloric acid, which is present in your stomach, or you can say bile juice. Or in base, about base, your soap, toothpaste, NaOH, these are the base. So the common thing in between the acid, they will release H positive ions, and in bases they will release OH negative ions. So now here we will discuss about salt, or you can say the small discussion about the salt, and after that we will discuss about the indicators. So what are the salts? Salts. So what are salts? So salts, the chemical substance formed by the combination of ions. They are the combination of ions of acids and base. I have provided notes also to you, so you can read in that only. So which acid plus base, when the acids combine with base, what you will get? You will get salt plus water. So here you can get the salt with the help of acid and base. Now next is example of acid and base. You can say that when you will add HCl with NaOH. NaOH, which is a base, HCl, which is a acid. When the HCl react with NaOH, you will get NaCl plus H2O. NaCl, which is a common salt, or you can find it in kitchen also. Okay, you can ask to your mom also, what is mama NaCl? So NaCl, it is a common salt, or it is a present at your home also. So this is the salt, and H2O is a water. With the help of, with the combination of ions of acids and base, what you will get? You will get the salt. So here we will discuss only small topic on the behalf of the salt. After that we will discuss in completely we will discuss about the salts. So we have in next session
we have more thing about the salts, but first of all we will discuss about the indicators. What are indicators? These type of sessions we will take for your convenience. We arranged by a whiteboard for yours only, so that you will not waste my knowledge and you will not waste your times. Okay. So what are the indicators? The chemical substance which indicates acid as well as base on the basis of their color change or their smell change. तो indicators कौन से होते हैं? तो indicators ये acid और base को indicate करते हैं with the help of acid or base. My marker is not working properly, so that just focus on my words first. Okay. So acid plus base. When the acid react with base, it will release salt plus water. Sorry. Here I am asking. We are talking about the indicators, and about salt we have told you before also. So what are the indicators? So the chemical substance which indicates acid and base on the basis of their color change and smell change. So first indicators on the behalf of, firstly we will discuss about the color change indicators. तो कलर चेंज में सबसे पहला जो इंडिकेटर्स आएगा, कलर चेंज इंडिकेटर्स, मतलब ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से एसिड और बेस में जब इनका कलर चेंज हो जाता है तो सो दैट टाइम्स यू विल गेट द व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज द बेस. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर and after that man-made indicators. My marker is still not working, but man-made indicators. I arranged the marker also. No problem. The session is going on. First is natural indicators. What are the natural indicators? First we will discuss about the natural indicators. What is the impact of natural indicators on the acid as well as base? तो natural indicators में सबसे पहला नाम आता है, first name is litmus. First is litmus, or you can say litmus paper. So what is the impact of litmus paper? We are also having two types of litmus paper. First is red litmus paper. Yes. Red litmus paper, and second is blue litmus Litmus paper. paper. What is the impact of red litmus paper on acid or base? So in acid and in base, when the red litmus paper, or when you will check the acids on the red litmus paper, their color remains same color remain same, and in base their color will be changed. तो color क्या change होगा? It turns into red. And about the blue litmus paper, in acid, blue litmus paper turns into red, but in base remain same. तो जब आप इसको बेस में देखोगे तो बेस में इसका कलर सेम रहेगा, किसका? ब्लू लिटमस का. और रेड लिटमस का एसिड में कलर सेम रहता है बट बेस में चेंज हो जाता है. तो बेसिकली विच शो द ब्लू इन कलर, तो दीज आर द
base and which show the red in color, तो these are the acid. तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रेड लिटमस हो या ब्लू लिटमस हो, अगर रेड कलर आ रहा है तो दीज आर द बेस, इट मीन्स दीज आर द बेस, वो बेस होंगे. और अगर ब्लू आ रहा है, चाहे वो ब्लू के साथ चेक करो, चाहे आप रेड के साथ चेक करो, तो अगर वो ब्लू कलर ही शो कर रहा है तो इट मीन्स इट इज अ बेस. तो ये तो था आपका फर्स्ट इंडिकेटर्स, दैट इज द लिटमस पेपर. नाउ सेकेंड इंडिकेटर्स, नाउ द सेकेंड इंडिकेटर arrange the second one also. Now the second indicators is turmeric. Turmeric juice. तो turmeric means हल्दी, सबको पता है. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है. तो एज यू नो कि टर्मरिक मीन्स हल्दी, ठीक है. तो यू कैन चेक एंड दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट यू कैन डू एट होम ऑल्सो कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टर्मरिक ऑन योर क्लोथ्स. तो यू विल ऑब्जर्व समटाइम्स दैट इट विल व्हेन द टर्मरिक juice it will lying on your t-shirts or your shirts and that will be of white color, so their color will be of yellow, but when you will apply the soap on it तो it turns red in color. देखा होगा बहुत बार कि भाई टर्मरिक जूस जब कभी कपड़ों पे गिर जाता है या सब्जी खा रहे हैं तो तब वो गिर जाता है तो उसका कलर येलो हो जाता है. लेकिन जैसे ही आप उसको सॉप के साथ, मतलब आपने तो कभी किया नहीं होगा बट आपकी मदर ने किया होगा, तो सॉप के साथ जब आप उसको रब करोगे तो देयर कलर विल बी चेंज एंड आफ्टर दैट तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, तो आप ऑब्जर्व करोगे वो रेड कलर का हो जाता है. तो द रीजन इज दैट कि व्हाई इट टर्न्स इन रेड कलर, बिकॉज रेड कलर द सोप इज अ बेस. तो एसिड के बीच में टर्मरिक जूस का जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो ही रहेगा, बट इन बेस इट इज रेड इन कलर, रेड कलर हो जाता है बेस में. तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल था, ठीक है. नाउ थर्ड इज रेड कैबेज. रेड कैबेज जूस. तो रेड कैबेज जूस जो एसिड में क्या होता है, रेड ही रहेगा, बट इन बेस it turns into green color. Now next is your man-made indicators. There is 3 indicators. First is litmus, second is your turmeric juice, and third is red cabbage juice. These are the natural indicators because these you will get from the natures, and litmus papers you will get from the lichen tree. तो lichen tree से भी आप मतलब वहीं से ही हमें ये मिलता है. तो now next is man made indicators. तो man made indicators which is synthesized by the human being at the laboratory, जो कि लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है. man made indicators. Now man made indicator which is synthesized at the laboratory. तो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, द फर्स्ट इज फिनोफ्थलीन. तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फिनोफ्थलीन ऑन द एसिड एज वेल एज बेस. तो कलर चेंज में फिनोफ्थलीन का इम्पैक्ट होगा. इन एसिड इट इज कलरलेस, but in base it will be pink in color. It will be pink in color. Now next is methyl orange. Second is methyl orange. Methyl orange. What is the color of methyl orange in acid?
नाम तो वैसे मिथाइल ऑरेंज है, बट इट विल बी ऑफ रेड इन कलर when you will add acid, और मतलब you when you will see in laboratory, so their color will be of red color. तो भले इनका नाम मिथाइल ऑरेंज है, but it is red in color, but in base their color will be changed in yellow. अब जब आप इसमें बेस ऐड करोगे तो इनर इसका कलर चेंज होके कैसा हो जाएगा, येलो इन कलर. तो these are those indicators which detect the acid and base on the behalf of their color change. So first was the natural indicators and second is the man-made indicators. Now we will discuss about the smell change indicators. मतलब smell जो उनको आप बोलते हो olfactory indicators. जो smell change indicators होते हैं वो basically उनको क्या नाम दिया जाता है, olfactory indicators. Olfactory indicators. तो फर्स्ट इसमें सबसे पहला नाम आएगा अनियन, जिसकी सैलेड्स तैयार होती है घर पे. तो यू ऑब्जर्व दिस थिंग व्हेन ऐड लेमन जूस इन द अनियन. जब सैलेड्स तैयार करते हैं तो उसमें कभी लेमन जूस डालते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व देयर स्मेल विल बी सेम. एसिड के अंदर अनियन की जो स्मेल होती है वो सेम रहती है, तो इट विल डज नॉट डिस्ट्रॉय देयर स्मेल. तो डजंट डिस्ट्रॉय देयर स्मेल. बट व्हाट अबाउट द बेस. बेस अगर आप ऐड करोगे तो इट विल डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियन. Destroy the smell of onion. आप चेक कर सकते हो. तो अगर आप कभी सॉप लिक्विड है या कोई भी बेस अगर आप ऐड करते हैं अनियन में, तो आप देखेंगे कि अनियन की जो स्मेल है वो चेंज हो चुकी है. मतलब चेंज क्या, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है. जो अनियन की जो स्मेल थी एक्चुअल में पहले जो उसकी स्मेल थी वो चेंज हो चुकी है. नाउ सेकेंड इज इन olfactory indicators, सेकेंड इज वेनिला एसेंस. आप कह सकते हो वेनिला जूस और कुछ भी आप इसको दे सकते हो. कि द सेम केस इन वेनिला ऑल्सो. इन एसिड इट डज नॉट डिस्ट्रॉय देयर स्मेल. एसिड के बीच में वेनिला की कोई भी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट इन बेस इट विल डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ वेनिला. वेनिला की बहुत अच्छी मतलब फ्रेग्रेंस होती है. तो एंड नेक्स्ट इज थर्ड वन. वैसे तो है नहीं बट हाँ अभी जगह आया हुआ है, जैसे क्लोव जैसे लौंग आप बोलते हो उसको. तो क्लोव, द सेम केस इन क्लोव ऑल्सो. In acid it will doesn't destroy the smell, but in base it will destroy the smell of clove. The same case in all the three indicators, olfactory indicators, they doesn't destroy the smell in the onion, vanilla and clove in basically in acids, and in base they destroy the smell of onion, vanilla, clove, मतलब all the three indicators. So here we discussed about मतलब indicators. तो on the behalf of indicators you can do some assignments, or firstly you have to read the notes we have provided earlier also. So first you have read it focused, with constantly, or with your heart basically. So don't do the study with burden. Do it with your heart and as well as with brain. Next topic we will take further. We have lots of times. Small topic we will do it because we have a small board. तो पहले छोटे टॉपिक्स लिए जाएंगे, and after that we will discuss in details when the classes will be started. तो अभी तो सिर्फ इतना ही, ठीक है. आफ्टर दैट वी विल टेक इट रेगुलरली. ओके, बाय बाय.